Welcome guys again. The fourth lecture of programming in Java. In first lecture, we have seen introductory lecture about Java. In second lecture, we are going some sort of deep in what is Java is developed. In third lecture, we have seen object-oriented programming language, features of Java in detail. Now we are going to start with writing a simple Java program. For writing this program, you must need with you a JDK installed in your system, which is uh, which is having a setting of class path which is done. So we are heading towards write a simple Java program. This is the simple Java program look like. This program is written in there are many types of editor is there. Editor means जिसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं, ऐसे नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है या एडिटर है जहाँ हम प्रोग्राम लिख सकते हैं. देयर इज अनदर कंसेप्ट ये है जो हम ये यूज़ कर रहे हैं, that we are going to use JDK we have installed, and after that we are running or we are developing or written down our program in notepad. After that we are saving that program in our JDK file, that is Java file in bin file, and after that we are compiling, and after we are running that program. This is uh, the way of program or steps that is followed with the help of JDK. And there is another procedure to run the program or to interpret the program. There are some sort of IDE available, IDE, that is integrated development environment, like a NetBeans, Eclipse are available there. मीन्स जिसमें हमने प्रोग्राम लिखा वह के वह हम कंपाइल कर सकते हैं और रन कर सकते हैं. दिस the way we are going, like we have installed JDK, we are writing code in notepad, after that we are saving in it bin file, after that we are compiling, after that we are running. In IDE we are going to write down a program and direct we can run the program, or we can build the program, or we can compile the program. That are the NetBeans and Eclipse are available for running the Java programs. We are going with writing both the program with the help of Eclipse or NetBeans also, or with the help of JDK also. So I think everyone has done up with the JDK installed with it. So writing a simple Java program, we are going to open a notepad. So if we have installed the JDK in our system, we should have program we are going to see in local disk C. After that we are going in program files. In that we are having Java. In Java we have JDK. In JDK we have bin. In that bin folder we have to save our program. So how to save, how to compile, how to run, what are compiler, what are interpreter, you must clarify all the things in today's lecture. So starting with writing a simple Java program, I have earlier mentioned that Java is a pure object oriented language, and C++ is supporting the object oriented programming language. So in C we can write a program with a class or without class also, but in a Java we must have to return down the program in class only. So first of all, starting with the class, we are going to write down a class. In the in class there is a syntax like class and class name. So here we have written down demo. D is capital. This is the naming convention, as I told you in previous lecture. So when you are trying to see the lectures, you must go through the previous lecture, so I can explain it, or you can betterly understand the things what's going on. So class demo, डेमो का डी कैपिटल रहेगा, दैट इज़ द नेमिंग कन्वेंशन. अगर स्मॉल भी दिया है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नेमिंग कन्वेंशन ये है कि जो इनबिल्ट क्लास है और यूज़र डिफाइंड क्लास है, यूज़र डिफाइंड क्लास मीन्स जो हम क्रिएट करते हैं, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन जो इनबिल्ट क्लास रहेगा लाइक थ्रेड, लाइक एप्लेट, ये जो रहेगा इनबिल्ट क्लास रहेगा. ये क्लास में जो क्लास लेंगे, लाइक थ्रेड क्लास हम यूज़ करेंगे तो थ्रेड का टी कैपिटल रहेगा, एप्लेट यूज़ करेंगे एप्लेट का ही कैपिटल रहेगा. So this is a user defined class. So we are return type class demo. अब हमने क्लास को ओपन किया और लास्ट में क्लास को क्लोज करेंगे. दिस विल बी द ओपन एंड दिस विल बी द क्लोज. दिस इज द क्लोज, दिस इज द क्लोज ऑफ अ क्लास, एंड दिस इज द wait, this is the open of the class and this is the close of the class. After that every program or every class or everything that needs to be run consists of a main function.
तो फंक्शन कैसे करेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेसेस रहेगा तो फंक्शन रहेगा, दिस इज द फंक्शन, ये ओपन होगा और ये क्लोज होगा, दिस इज द मेन फंक्शन। द मेन फंक्शन में जावा में जो भी आएगा दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा तो एक ही थिंग आएगी तो एक ही रहेगा, अगर मल्टीपल आएंगे तो उसका एरे तैयार करना पड़ेगा या एरे फॉर्म करना पड़ेगा। दैट एरे विल बी द, एरे का नेम क्या है, ए आर जी एस। और एरे को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए आर जी एस के बाद में जो दिए उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। सो व्हाट इज दिस स्ट्रिंग ए आर जी एस क्यों पास किया, क्योंकि जावा में जो भी कोई कुछ आएंगी चीज़ें वो दैट विल बी पास्ड एज अ स्ट्रिंग। सो जो मेन फंक्शन में हमने जो भी पास करेंगे, प्रिंट लिखेंगे, इनपुट देंगे, आउटपुट देंगे, जो भी देंगे, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग एंड दैट विल बी पास्ड। अगर एक ही स्ट्रिंग रहेगा तो हम ऐसा दे सकते थे स्ट्रिंग एस, अगर हमको पता था कि एक ही स्ट्रिंग आएगी तो हम दे सकते थे। लेकिन यहाँ पे कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग आएंगे, मोर देन वन स्ट्रिंग आएंगे, तो हमने स्ट्रिंग का एरे क्रिएट किया, वो एरे का नाम क्या है, ए आर जी एस। उसका नाम कुछ भी हो सकता है, इन्होंने स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स लिया है यहाँ पे। तो हम कुछ भी दे सकते हैं, वन दे सकते हैं, टू दे सकते हैं, थ्री दे सकते हैं, या वन टू थ्री मीन्स इट इज साइज रिलेटेड, नाम कुछ भी दे सकते हैं, स्ट्रिंग एरे लिख सकते हैं, स्ट्रिंग कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि ARG से लिखना है, इट इज कंपलसरी दैट इट इज डेटा टाइप इज स्ट्रिंग एंड नेम विल बी एनीथिंग एंड दैट इज द एरे। तो इसमें हमने मेन फंक्शन लिया। टिल नाउ I think you have cleared the concept of why in main function we have passed string args। string args open किया, close किया, string args means we have passed that everything in the program that are coming that are be converted into the string array। स्ट्रिंग एरे को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्ट्रिंग डेटा टाइप देंगे, उसके बाद वो एरे का नाम और उसको ओपन क्लोज करेंगे। तो वो एरे का नाम क्या पे, यहाँ पे ARGS। तो ये जो सब है वो किस में, कौन से फंक्शन में, मेन फंक्शन में। और मेन फंक्शन को कोई भी फंक्शन होगा उसके दो रिटर्न टाइप रहते हैं, एक तो वाइड रहेगा या इंटीजर रहेगा। वाइड जो काम है वो जैसे कि वैसा एग्जीक्यूट करेगा, और इंटीजर मीन्स वो फंक्शन कुछ भी वैल्यू रिटर्न करता है। इफ आई हैव डिक्लेयर माय फंक्शन नेम इंटीजर ऐड, और हमने क्या किया, ए बी सी लिया और ए बी सी में ए प्लस बी ऐड किया, तो ये जो सी रहेगा वो हम रिटर्न कर सकते हैं फंक्शन को, और फंक्शन एज इट इज़ पास हो सकता है जिसको वैल्यू चाहिए उसको। तो जो वाइड रहेगा वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन जो इंटीजर रहेगा दैट विल बी द रिटर्न समथिंग। सो जब भी हम इंटीजर लेते हैं ना, तो इंटीजर को रिटर्न स्टेटमेंट कंपलसरी चाहिए। अगर हम कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहे तो रिटर्न जीरो दे सकते, अगर कुछ वैल्यू हम मैनिपुलेट करते या कुछ वैल्यू हम जनरेट करते या कुछ वैल्यू के कैलकुलेशन करते, तो वहाँ पे रिटर्न वो वेरिएबल देना कंपलसरी। अगर मैं इंटीजर ऐड लेता हूँ, ठीक है, इंटीजर ऐड फंक्शन लिया मैंने, तो मैंने ए बी सी लिए, उसमें सी में ए प्लस बी की एडिशन करता हूँ, तो एडिशन करने के बाद मेरे को सी रिटर्न करना पड़ेगा, किसको रिटर्न करना पड़ेगा, ऐड को। अगर मैं सी की वैल्यू मेरे को यूज़ करनी है तो आई विल यूज़ दैट ऐड फंक्शन। अगर मैं डायरेक्ट ऐड फंक्शन यूज़ करूँगा तो ऐड फंक्शन में क्या रहेगा, वैल्यू ऑफ सी। क्यों, हमने सी को रिटर्न किया है, तो क्यों रिटर्न किया है, क्योंकि इंटीजर ऐड दिया है, तो इंटीजर मीन्स रिटर्न टाइप दिया है हमने, रिटर्न टाइप दिया है, एक तो वाइड रहेगा या इंटीजर रहेगा, तो हम इंटीजर डेटा टाइप रिटर्न कर सकते हैं। तो इसके फंक्शन के दो प्रोटोटाइप है, एक वाइड है या इंटीजर है, या हमें कुछ रिटर्न नहीं करना है इसलिए हमने वाइड दिया, ठीक है। वाइड मेन, इट इज़ अ प्रोटोटाइप। सो वी हैव कंप्लीटेड टिल क्लास डेमो। वाइड के बाद मेन रहेगा, और स्ट्रिंग ARGS में स्ट्रिंग डेटा टाइप रहेगा और ARGS एरे रहेगा। उसके बाद ये मेन फंक्शन है, ये मेन फंक्शन ओपन होगा यहाँ तक क्लोज हो जाएगा। तो आफ्टर दैट वाइड मेन we have a static keyword before a void। what is a static keyword? Static keyword means in Java if we have to write any class, we have to manipulate anything, we must need to create a object। हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत रहेगी। अभी कोई फंक्शन है उसको यूज़ करना है, कोई भी फंक्शन हो उसको यूज़ करना है, तो यूज़ करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना नेसेसरी है। तो दिस इज़ द मेन फंक्शन। अगर मेन फंक्शन का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने लगे तो वी नीड टू मेंटेन और वी नीड टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट। तो स्टैटिक कीवर्ड ऐसा है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले ही उसको मेन फंक्शन को उसकी मेमोरी स्पेस दे देगा। तो देर इज़ नो क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर अ मेन फंक्शन। अगर मेरे को कोई भी फंक्शन हो अगर उसको ऑब्जेक्ट क्रिएशन की ज़रूरत नहीं है तो दैट विल बी द स्टैटिक फंक्शन। मीन्स ऐसा क्यों दिया है, तो ये जानना बहुत नेसेसरी कि ये पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन क्यों देते। अब इसको मगअप नहीं करने का या इसको लर्न नहीं करने का, यार वी हैव टू रिटर्न डाउन लाइट पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन ही रहेगा, ऐसा नहीं। क्यों रहेगा तो उसके पीछे रीज़न है। तो स्ट्रिंग ARGS मीन्स जो भी जावा में चीज़ें आएगी वो स्ट्रिंग एरे में कन्वर्ट होगी।
उसके बाद वो मेन फंक्शन में पास होगा। वाइड उसका रिटर्न टाइप है। स्टैटिक मीन्स वो फंक्शन को ऑब्जेक्ट क्रिएशन की जरूरत नहीं, और पब्लिक मीन्स इट शुड बी एक्सेस एवरीवेयर. So this is the description of your main function, how it is look like a public static void main, and we have passed a string arguments. uh, I think you should clear difference between public static void main. I will explain again. This is the simple program. If you understand this, you will have a format like this in upcoming lecture. So you will understand everything easily, and it is quite easy to understand. It is not any hard concept to understand. I will explain again. पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन क्यों देते हैं, स्ट्रिंग एआरजीएस क्यों देते हैं, एआरजीसी क्यों दिया, एआरजीएस मीन्स इट इज एरे, इसका नाम कुछ भी हो सकता है। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंग डेटा टाइप दिया है, मेन फंक्शन में पास किया है। वाइड मीन इसका रिटर्न टाइप है। स्टैटिक मीन्स इट इज अ मेन फंक्शन, इट डज नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट टू क्रिएट. आफ्टर दैट वी हैव गिवन पब्लिक before, sorry, in keyword we have given that is public. This public is used that the main function should access everywhere in the class. So after that we have created open function, open किया और function को क्या किया है, close किया है। उसके बाद हमने क्या किया है, if we need to write any statement in Java, we need a println function. What we need? Println. In C or in C++, we are used to write print only. In this we can also write print only, but ln means end of line, means जो भी कर्सर रहेगा वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा अगर ln देंगे, अगर ln नहीं देंगे तो वो कर्सर वही लाइन पे रहेगा. So like /n we are given in C and C++. What we have given or what we are write, println it is also a function. How to identify? अगर println खत्म हो जाता है तो ये ओपन रहेगा और ये क्लोज रहेगा, मीन्स दिस इज अ फंक्शन. सो फंक्शन के अंदर जो डबल कोट में जो भी रहेगा दैट विल बी प्रिंटेड एज इट इज, बिकॉज इट इज अ प्रिंट फंक्शन. तो प्रिंट फंक्शन क्यों दिया है, क्योंकि वो सिस्टम पैकेज में, कौन सा पैकेज में, सिस्टम. देखो सिस्टम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. अभी सिस्टम में जो आउट है उसमें कौन सा फंक्शन है, प्रिंटलन फंक्शन है. सो दिस इज अ सिस्टम क्लास दैट कंसिस्ट ऑफ आउट, इनपुट आउटपुट जैसे रहेगा उसमें आउट रहेगा एंड प्रिंटलन रहेगा. अगर हमको इनपुट लेना है तो हम सिस्टम डॉट इन लिखेंगे. तो अभी इनपुट कैसे लेना है, कैसे करना है, वो मैं यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा. इफ़ यू हैव टू टेक इनपुट, सो वी हैव टू राइट डाउन सिस्टम डॉट इन. इफ़ यू हैव टू राइट डाउन, if or we have to print, so we can write as system dot out. If you want to accept the input, we have to write down system dot in. So this is system which is consist of in this. If you have to go to explore side, अगर एक्सप्लोर करना है कुछ भी तो हम उसको डॉट ऑपरेटर से एक्सप्लोर करेंगे. अभी डायरेक्ट सिस्टम लिखा है, सिस्टम के अंदर कौन सा है, आउट है, तो आउट में कौन सा है, प्रिंट एल है, तो प्रिंट एल यूज़ करना है. अगर सिस्टम में इसे इन यूज़ करना है तो सिस्टम डॉट इन लिखेंगे. तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ प्रिंट एल एन फंक्शन, और डबल कोट में जो भी लिखेंगे ना तो वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, रैदर देन कीवर्ड्स. जो कीवर्ड्स है जावा की इनबिल्ट, वो कीवर्ड्स अगर इसमें नहीं आएंगे तो एज इट इज़ वो प्रिंट हो जाएगा. जो कीवर्ड्स है जावा के, इन नेक्स्ट पीपीटी और इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल हैव दैट कोड और दैट constant ppt, what is the keyword of consist of in java. So that must not include in this. If you want to include in this, that will work as the thing. Like if you are going to write java is better than c++, so in double quote it is type as it is in your output statement. So कोई भी चीज़ है, अभी मेन फंक्शन को मेरे को टर्मिनेट नहीं करना था इसलिए मैंने सेमीकोलन नहीं दिया. अभी मेरे को प्रिंटलन स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना है तो मैं क्या दूंगा, सेमीकोलन दूंगा. So in this like system.out.println, java is better than c++. So मैंने ये जो क्लोज किया है वो क्लोज किसका है, दिस क्लोज विल बी द closing of main and this will be the closing of your class. So I will explain again how to write a java program. तो कोई भी काम रहेगा तो उसमें input रहेगा. So in this we are starting with the class demo. class, जो क्लास का नाम रहेगा वो क्लास को ओपन किया, उसके बाद मेन फंक्शन रहेगा, मेन को ओपन किया, उसमें प्रिंटलन रहेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू क्लोज मेन फंक्शन, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू क्लोज अ क्लास.
So this is a simple program, main function public static void main क्यों लिया, system dot out dot println क्यों लिया. अगर यहाँ पे प्रिंट भी लेते थे तो कोई भी इशू नहीं होता था. println इट इज़ फॉर, अगर मैं कोई भी अगला स्टेटमेंट लिखता हूँ जावा इज बेटर देन सी, इफ वांट टू राइट जावा इज बेटर देन सी, देन इट विल बी outputted as next line after java is better than c++. जो जावा इज बेटर देन सी प्लस प्लस, उसके बाद अगर प्रिंट एलियन स्टेटमेंट लिखते थे तो जावा इज बेटर देन सी प्लस प्लस, और नेक्स्ट लाइन में एंटर मारने के बाद जो नेक्स्ट लाइन होती है उसमें जावा इज बेटर देन सी रहेगा, क्योंकि हमने प्रिंट एलियन स्टेटमेंट दिया. अगर प्रिंट एलियन स्टेटमेंट नहीं देते थे, जावा इज बेटर देन सी प्लस प्लस, सेम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखता थे जावा इज बेटर देन सी, तो वो स्टेटमेंट एक के बाद एक आता था, एक के नीचे एक नहीं आता था. दैट इज द मेन पर्पज ऑफ प्रिंट एलियन स्टेटमेंट. So next, this is the description by program explain line by line. I have created this PPT. This has taken too much time, that I have been included almost all the explanation regarding program, regarding Java unit 1, Java PPT consist of all the things. So from starting, class demo declares a class. In Java, everything must be placed inside a class. Class is a keyword and demo is the name of a class, and write name of a class starting with the capital letter. This is the naming convention. If you don't want to write, you uh, you you can write anything what you want, but it must be starting, and it must be starting with the class and class name, and it first letter should be capital. Opening braces, every class definition begins with an opening braces and should end with the matching closing. Public static void main, method main is entry point of execution of the program, just like a C and C++. Public is an accessifier, provides unrestricted access to the class, can access the main. Static means that the main belongs to the class, not to objects. Main should always be created as a static, as it is executed before any object is created. And void is a return type, which means the main method does not return anything. So system.out.println, it is output statement. Println is a method or function, is a member of a out object, which is a static data member of system class. System क्या रहेगा, class रहेगा, उसमें static data member object out रहेगा, और उसके बाद जो रहेगा वो मेथड रहेगी. मीन्स अब ये ऐसा क्यों यूज़ किया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलिंग क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हमको प्रिंट करना है. तो प्रिंट किससे बिलोंग करता है, आउट को बिलोंग करता है, और आउट किस कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, तो सिस्टम को बिलोंग करता है. तो सिस्टम इट इज़ अ क्लास. सो सिस्टम ये क्लास रहेगा तो उसका एस कैपिटल ही रहेगा. अगर स्ट्रिंग डेटा टाइप रहेगा, सो आई नीड टू रिवाइज यू अगेन. क्लास डेमो रहेगा, पब्लिक स्टैटिक वाइड माइंड रहेगा, या भी जो भी डेटा टाइप देंगे हम, तो उसका पहला लेटर कैपिटल ही रहेगा. इट मस्ट कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट लेटर कैपिटल. सो स्ट्रिंग इट इज डेटा टाइप, एंड जो क्लास रहेगा उसका पहला लेटर कैपिटल ही रहेगा. तो स्ट्रिंग डेटा टाइप है तो डेटा टाइप का पहला लेटर कैपिटल रहेगा, तो एस स्ट्रिंग देंगे तो उसका पहला लेटर कैपिटल ही रहेगा. उसके बाद अगर मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखता हूँ तो सिस्टम भी एक क्लास है, तो उसका फर्स्ट लेटर दैट विल बी द कैपिटल. सो दिस इज द नेमिंग कन्वेंशन. ये केस सेंसिटिव है जावा प्रोग्रामिंग. तो जावा प्रोग्रामिंग इट इज अ केस सेंसिटिव. सो we need to write a capital, starting letter is a capital while doing declaring data type, as well as the class, inbuilt class or class name, that is inbuilt or user defined. तो system is a class, out is object, and println is a method. so system का s कैपिटल रहेगा, ये क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट आउट है, आउट में println मेथड है. अगर सेम मेरे को इनपुट लेना है तो सिस्टम डॉट इन करता हूँ मैं. ठीक है. दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर क्लास, हाउ इट लुक लाइक्स, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ योर क्लास डेमो. After that, how to compile and how to run that file. So compiling a program, we must run the Java compiler Java C as a follow. Java C file name, example Java C demo.java. If everything is correct, Java C creates a bytecode in a class file with the same name as a source file with a dot with the class extension for a demo.java. Demo.class file is created. सो सबसे पहले क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ. नोटपैड में हमने अगर प्रोग्राम लिखा, तो नोटपैड में अगर प्रोग्राम लिखा, तो प्रोग्राम लिखने के बाद उसको सेव करेंगे. तो सेव कर कहाँ करेंगे, तो सेव करेंगे सी में, प्रोग्राम फाइल्स में, जावा में, जेडीके में, और बिन में जाएंगे. बिन में जाके सेव करेंगे. क्लास पाथ बिन तक एड्रेस दिया है,
तो बिन में जाके उसको सेव करेंगे, और सेव करने के लिए आपको वो फाइल नेम डॉट जावा से सेव करना है। तो फाइल नेम क्या रहेगी? तो फाइल नेम इज सेम एज योर क्लास नेम। तो क्लास नेम जो भी रहेगा, तो वो उसका जो फाइल नेम रहेगा वो वही रहेगा। अभी यहाँ पे क्या है? डेमो है। तो अब अगर मेरे पास मोर देन वन क्लास फाइल है, तो मैं कौन सा लूँगा? अभी मेरे पास दो क्लास है, डेमो और डेमो वन। तो मैं कौन से फाइल से सेव करूँगा? विच कंसिस्ट ऑफ मेन फंक्शन, जिसमें मेन फंक्शन रहेगा। अभी मेरे पास 10 क्लास है और डेमो में मेरा मेन फंक्शन है, तो मैं किससे सेव करूँगा? डेमो से सेव करूँगा। सो इफ आई हैव रिटन डाउन दिस प्रोग्राम इन यूर नोट पैड, आई मस्ट गो टू द फाइल, उसमें सेव करेंगे। सेव करने के लिए हमको सी में जाना पड़ेगा, सी में प्रोग्राम फाइल्स में, उसमें जावा में, उसमें जेडीके में, उसमें बिन फोल्डर में। और बिन फोल्डर में जाके नाम देना पड़ेगा डेमो। डेमो का डी कैपिटल रहेगा, डेमो डॉट जावा। जैसे हम ये करेंगे, तो हम जैसे भी अब ये प्रोग्राम कहाँ से रन करना पड़ेगा? ये प्रोग्राम रन करना पड़ेगा CMD से, कमांड प्रॉम्प्ट से। सो आई विल व्हाट यू कैन डू टुडे lectures, you just understand till this system.out.println. You just understand this program. In tomorrow's lecture, I will post the video with a compilation and with a running file. Everything I will post in tomorrow's lecture. So today you just listen, you just understand, or you just overview this simple Java program. Why this public static void main? What is class Java? What is system.out.println? And this will I will explain in a next lecture. That what is the compiler, Java program is recorded, and all this. Okay. So I will explain everyone to go through it. And as I am observing that the video are not getting that much views, so you just again I am requesting, I will post a series. This is my fourth lecture, so you just go through all the series, and you have any sort of question, you can feel free to ask me. We'll have next lecture and we'll have fun while doing programming and coding. So thank you very much.